welcome viewers to my YouTube channel, The Fluency Adders. So I am here to welcome you all to the brighter day, to a brighter video, and to a new video of a new topic. So basically, I am just about to introduce the new topic regarding the spoken English section. Actually, I am going to make you familiar about the one word substitution. अब ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, इसका मतलब ये है कि मतलब जब हम किसी एक ग्रुप ऑफ सेंटेंस को या एक सीरीज ऑफ सेंटेंस को एक ही तरह से किसी तरह से उसको मतलब डिफाइन करना चाह रहे हैं तो हम उसका एक ही नाम यूज़ करते हैं. इंस्टेड ऑफ यूजिंग द होल सेंटेंस वी यूज द सिंगल वर्ड. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो फॉर द फर्दर रिव्यू. सो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बेसिकली इस तरह से डिनोट किया जाता है जस्ट लाइक अब हम एक ग्रुप ऑफ सेंटेंस है और ये एक फॉर्मल सेंटेंस है, ठीक है. गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल. अब इसको एक्सप्लेन करना है तो हम एक सीरियसली और एक इनोवेटिव वे में जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो हमने उसके बारे में यूज़ करना है डेमोक्रेसी. ओके, सो वी कैन यूज़ द वर्ड डेमोक्रेसी इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल. सो जब हम इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं तो ये हमारे लिए नाम देता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का. तो इसी तरह से कुछ और सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसके सोर्स पे हम वर्ड सब्स्टिट्यूशन को ऐड करते हैं और एक न्यू वे में एक हम न्यू लिस्ट ऑफ वर्ड्स को जनरेट कर सकते हैं अपनी वोकैबुलरी में इंट्रोड्यूस करने के लिए. सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट द सेंटेंसेस. सो विद इन द वर्ड फर्स्ट सेंटेंस वी हैव द सेंटेंस दैट गवर्नमेंट ऑफ द पीपल. सो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल डज डिफाइन as a single word, that is democracy, okay, which can be called as jamhuriyat. The number second is the government of the king. Government of the king does mean that is monarchy, that is crownship, that has been already engrossed in the former centuries, in the Elizabethan century, and we can say in the Mughal periods. Okay, that was the monarchy, crownship. Number third, we have the statement as government of the one person. Yeah, government of one person. It can be called as aristocracy or autocracy. Autocracy means there is the only one person who is bound to govern all the people, or who is bound to govern and who is bound to govern the subject of the nation is known as autocracy. So number fourth, we have the sentence government of the few. Means there are the group of words, group of people, or limited group of people, or limited set of number of people that are about to govern the subject that can be used with one word substitution is oligarchy. Okay, this is how we can use the word oligarchy. So number fifth, we have the sentence the people or people who love mankind are known as philanthropists. So we have an solid and a highly defined example, that is Edhi. Abdul Sattar Edhi is one of the main philanthropists all over the world, and he is never be forgotten till the death of any person who. So the people who love mankind is known as or are called as philanthropists. People who hate mankind are called misanthropist. Means we can use the word, or we can use an example that Adolf Hitler was one of the person that who hate the mankind. People who sees darker side of the fate, darker side of the life is called as pessimist. यानी एक ऐसा बंदा जो कि सिर्फ हमेशा ही एक नेगेटिविटीज़ को ही फॉलो करता है और उसी को ही अपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाया हुआ है, या उसी की लाइफ में अपनी लाइफ में उसी नेगेटिव साइड्स को ही प्रेफर करता है, तो डेफिनेटली ही वुड बी कॉल्ड एज पेसिमिस्ट. पीपल हु सीज ब्राइट साइड और द ब्राइटर साइड आर कॉल्ड एज ऑप्टिमिस्ट. यानी ऐसे लोग जो कि ज़िंदगी की सिर्फ अच्छाइयों की तरफ फॉलो करते हुए या अच्छाई को देखते हुए ही अपनी ज़िंदगी को मतलब गुजारते हैं, तो उन्हें हम ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, उन्हें हम खुशबख्त कह सकते हैं, उन्हें हम एक अच्छे मतलब कह सकते हैं कि अच्छी सिफ्त वाले लोगों में शुमार किया जाता है उनका, तो उन्हें ऑप्टिमिस्ट ही कहा जाता है. यानी अ पर्सन हु हैज़ एन ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रिगार्डिंग हिज लाइफ, रिगार्डिंग सम स्टेटमेंट्स कैन बी कॉल्ड एज ऑप्टिमिस्टिक or optimist. So these were the statements and these were the words that can be used in one word substitution
that is democracy, monarchy, autocracy, oligarchy, philanthropist, misanthropist, pessimist, and optimist. So these were the vocabulary words that I have introduced you in today's video. I hope this video would be beneficial for you, for making you learn the new ways of experiencing new vocabulary, and to address yourself in a higher way of speaking English. So these was the all from my side. Thank you, and don't forget to subscribe my channel, The Fluency Adders, and don't forget to hit the bell icon so that you can never miss any update in future. This is Basit Ali signing off. Allah Hafiz.